ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના વધી રહેલા સંકટ વચ્ચે કેન્દ્રીય આરોગ્ય ટીમ ગુજરાત આવી પહોંચી છે। દિલ્હીથી 3 સભ્યોની ટીમ આજે અમદાવાદ આવી છે। આ ટીમ રાજ્યના સ્વાઇન ફ્લૂ પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે। આ ટીમે આજે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં સ્વાઇન ફ્લૂ વોર્ડમાં અપાતી સારવાર અને તેના દર્દીઓ અંગે માહિતી મેળવી હતી। કેન્દ્રીય આરોગ્ય ટીમ આજે કચ્છ જવા રવાના થશે। આ ટીમ ગુજરાતમાં 3 દિવસનું રોકાણ કરશે। राज्य में बढ़ता स्वाइन फ्लूना केसों ने लईने केन्द्र आरोग्य विभाग की टीम आज अमदावाद सिविल हॉस्पिटल खाते मुलाकाते आई थी। खास कर जो बात करें तो आ दिल्ली की टीम है 3 सदस्यों टीम है, तो हाल स्वाइन फ्लूना आइसोलेशन वॉर्ड जो बनाववामां आव्यो छे आइसोलेशन वॉर्ड में आव्या छे। अहींया आगळ दर्दीओ ने तेओ मळी रह्या छे अने पूछपरछ करी रह्या छे। तदुपरांत आ जे टीम है आ टीम स्वाइन फ्लूनी जो ओपीडी सिविल हॉस्पिटल में बनावी है त्यां आगळ पण तपास हाथ धरी हती। कया प्रकारना केसो सामे आवी रह्या छे, दर्दीओ क्यांना छे, जे दरमियान आ टीमे पोताना तपासमां नोंध्युं हतुं के आ जे दर्दीओ छे खास करीने अमदावादना आसपासना जिल्लाओना आवी रह्या छे, जेना कारणे आरोग्य विभागनी टीम पण ते जिल्लाओनी मुलाकात ले तेवी शक्यता जोवा मळी रही छे। केमेरामेन वसंत साथे मल्हार वोरा, GSTV अमदावाद।